in 1980. But a campaign? To save Mohenjo-daro. To save Mohenjo-daro. Save Mohenjo-daro. Okay, save. To save Mohenjo-daro. After that it was okay. So then we are not threatened by the Indus anymore, but this downpour was from the skies and it was unprecedented, and we have to now go for the changed conservation policy to be Take into account. Yeah. That's why we are organizing the same call in the end of the year in November in Venus. Very well, thank you very much. I wish to present Secretary Safar. Thank you. A souvenir of the सेक्रेटरी जनरल कौमी मुत्तहिदा अंतोनियो गोतरेस इस वक्त मोहनजोदाड़ो में मौजूद हैं। उन्हें तारीखी अहमियत के हवाले से ब्रीफिंग दी, मोहनजोदाड़ो के हवाले से उन्हें ब्रीफिंग दी जा रही है। It's actually about this high. The statue that we're creating is very small. Indians के पास है या हमारे पास है? नेशनल म्यूजियम में है। Dancing girl is in Delhi, National Museum of India. So we say the Indians have stolen our dancing girl. So we have the हमने divide किया, एक Beard वाला हमने बाबा एक हमारे हमारे पास है। Thank you very much. And set of books regarding Indus Valley civilization. Oh my God. And the historical book written by the Sir John Marshall, the then head of the Archaeological Survey of India. So, do I have a volunteer? Yes, we Oh, it's amazing. No, one of the things I read about is when we compare these with other, I would say, first civilizations, no? Like in Mesopotamia or in Egypt, they were corresponding to very hierarchical societies with clear distinction between the people and a religious or political elite, very small and very powerful and rich, and the architecture was to have very big things for them, and the rest has disappeared. When one looks at Mohenjo-daro, it looks a much more democratic society. Plural society. You don't see very important buildings for important people. You see a city in which apparently people would live and would organize themselves in a rather democratic way. No? Correct. It is We true. haven't found any war weapon from any archaeological site of Indus Valley. No civilization. weapons. No weapon. They were pacifist people. And no structure of a big palace. No Palestinian, any sign of any Palestinian. No hierarchy, not even religiosity or anything like. Well, I mean, I suppose. Yes, that is very interesting. I mean, it's because the norm is these civilizations to have a very hierarchical structure. I mean, Correct. after we moved from hunting to agriculture and other things, that political structure developed. But here it was. Most of the historians say we were the pioneers of even clothing and textile. First textile industry was here, this Mohenjo-daro. And first spin was introduced by the Mohenjo-daro people at that time. And this color, indigo color, they used to cultivate the crops of indigo. And they made this blue color out of it. Compared with Mohenjo-daro, Harappo is of the same period? Yes, same. Same period Same. and same structure? Same structure. No difference? No any difference. The same drainage system, not only here but in same Gujarat. civilization. We have three important sites in Indian Gujarat. Yeah. Dholavira, Kalibangan and Lothal. And we have important sites other than Mohenjo-daro. There are two sites. One is Lakhinjodaro near to Sakhar city. Second one is Chahunjodaro near to Nawabshah city. So French archaeologists are working over there on that site. Even the same kind of structure and the drainage system is there, we found. So it all belonged to the same The civilization? same civilization, from Kashmir, Tibet to the Albion Sea. And apparently there was no hierarchy among the cities? Excellency, would like to write few words. Yes. So visitors. सेक्रेटरी जनरल कौमी मुत्तहिदा अंतोनियो गोतरेस इस वक्त मोहनजोदाड़ो के दौरे के मौके पर मौजूद है। मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद कर रहे हैं। इससे पहले उन्हें
Dr. Lashar is there. वहाँ पर पहुंचे हैं सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गूतरेस इस वक्त मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद कर रहे हैं। मोहनजोदाड़ो में मौजूद हैं। उन्हें मोहनजोदाड़ो की तारीखी अहमियत के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। पाकिस्तान में ये रिवायत रही है, अगर हम बात करें सदफ के, जब भी कोई मेहमान आता है तो इस तरह की किसी साइट पर विज़िट करता है या किसी ऐसी जगह पर पहुँचता है तो उसके तासुरात जो हैं वो कलम बंद करवाए जाते हैं ताकि एक सनद भी रहे और हमारे में जो मेहमान यहाँ पर पहुँचे हैं वहाँ पर उनको भी ये याद रहे कि वो इस इलाके का विज़िट करके गए हैं। मोहनजोदाड़ो के हवाले से अगर हम बात करें तो जिस तरह सदफ आप अभी बात कर रही थी कि एक तारीखी अहमियत का हामिल है। एक तरफ जहां ये कौमी वर्सा है तो वहां 1980 में इसको आलमी वर्सा जो है वो यूनेस्को के जानिब से करार दिया गया था और उसके बाद से लेके अब तक वहां पर मजीद जो है वो हम देख रहे हैं कि उस इलाके को बेहतर बनाने के लिए और उसकी तारीखी अहमियत जो है उसको उजागर करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। यही वजह है कि आज सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गूतरेस जो है वो भी वहां पर पहुंचे हैं। मोहनजोदाड़ो के हवाले से एक तारीख साज अहमियत का हामिल है ये इलाका और सदियों पुरानी तारीख जो है वो पोशीदा है मोहनजोदाड़ो में। बिल्कुल इसी तरह जैसा कि हम अपने स्क्रीन के बाएं तरफ ये देख रहे हैं मनाजिर मोहनजोदाड़ो से तारीखी विरसा है पाकिस्तान के अंदर मौजूद। ये जो विरसा है हमारा एक बहुत बड़ा उजूबा इसको करार दिया गया। बहुत बड़ा मौमा है कि किस तरीके से मोहनजोदाड़ो एक आर्कियोलॉजिकल साइट के अंदर कन्वर्ट हो गया और अगर हम देखें तो इस कदर पुरानी इसकी तारीख है लेकिन अभी भी हम ये देख सकते हैं कि नकासी आपका यहाँ पे बड़ा प्रॉपर तरीकाकार था। जो लोग यहाँ पर रहते थे उनकी बहुत खूबसूरती से वहाँ पर नकासी आपका तरीका किया गया था और यहाँ के जो लोग थे वो इतने पुराने ज़माने में भी इस कदर सिविलाइज थे कि अभी तक उन पर तहकीकात जारी हैं और इसी हवाले से उन्हें जो है वो ब्रीफिंग भी दी गई। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गूतरेस इस वक्त मोहनजोदाड़ो के दौरे के मौके पर मौजूद हैं। And in that unprecedented level of destruction, Pakistan, that is facing a lot of challenges and economic and financial challenges, has not the capacity to alone be able to recover and to rehabilitate and reconstruct. So there is an obligation of the international community to massively support Pakistan. This was the result of climate change. Pakistan doesn't contribute much to climate change, so it is a responsibility of the whole of the international society to participate actively with, as I said, massive support to Pakistan to be able to provide the necessary assistance to the people victimized. And I had today very dramatic testimonies of the suffering of the people and at the same time to create conditions to build back and to build back in a way that will be more resistant, more resilient to natural disasters like this one. This is why it's so important that the next COP about climate change clarifies the need of increased financial support to developing countries in relation to the so-called adaptation, which means building resilience of infrastructure and communities, and to have a serious discussion on loss and damage. Okay. मनाज़िर आप देख रहे हैं इस वक्त मोहनजोदाड़ो के सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गूतरेस मोहनजोदाड़ो के दौरे के मौके पर मौजूद हैं और उनके हमरा वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी मौजूद हैं। जब वह यहाँ पहुँचे तो उनको ब्रीफ किया गया मोहनजोदाड़ो की तारीखी अहमियत के हवाले से और किस तरीके से हुकूमत जो है इसको प्रिजर्व करने के आलमी वर्से को अपने इक़दाम कर रही है उसके हवाले से भी आगाह किया गया। इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गूतरेस की जानिब से भी इजहार ख्याल किया गया। और ये भी आप देखेंगे कि किस तरीके से अंतोनियो गूतरेस पाकिस्तान में दिलचस्पी ले रहे हैं। इससे पहले भी अपने बयानात के अंदर वो एक चीज़ कह चुके हैं कि पाकिस्तान मेरे दिल में एक इंतहाई अहम गोशा रखता है, एक इंतहाई अहम जगह है पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ के लोगों के दुख दर्द को भी मैं महसूस कर सकता हूँ। पाकिस्तान के दौरे के मौके पर अंतोनियो गूतरेस इस वक्त मौजूद हैं।